Safira Pakistan. Program focus on the life and achievement of Pakistani American. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं नाज़रीन। सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा अपना का एक प्रोग्राम, अपना कन्वेंशन के सिलसिले में समर उनकी जो मीटिंग थी, मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा। और अभी और भी कुछ प्रोग्राम आने वाले हैं जिसको हम तरतीब दे रहे हैं, जिसमें दोगाना और किंग एडवर्ड कॉलेज की अलमनाई के जो फंक्शन थे उसकी भी तफसील कुछ प्रोग्राम में हम डाल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपका अपना प्लेटफार्म है। अगर आपके भी शहर में कोई ऐसी इवेंट हो रही है, कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसको आप सफ़ीर पाकिस्तान पे लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाइए। बल्कि मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप अपने मशवरों से नवाजें, और कोई भी आपका अपना ख्याल हो और कोई आपकी राय हो तो हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और आपके ही लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर ब्यूरो चीफ़ देख रहा हूँ जो सफ़ीर पाकिस्तान को रिपोर्ट करें और वहाँ की ख़बरों के बारे में हमें इत्तला करें, ताकि हम कम्युनिटी को करेक्ट रखें। और यही है सफ़ीर पाकिस्तान का नाम, यानी कि राब्तों का एक नाम और आपके जज्बात का सही तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ चीज़ें ऐसी पेश कर रहे हैं वाकई जो आपको खुशी होगी। पिछले हफ्ते हमारा जाना हुआ था सैन होज़े। 3 हफ्ते पहले एक हमने प्रोग्राम अटेंड किया था सैन होज़े में ओपन का, जो कि सेप कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि राइजिंग लीडर हैं बिज़नेस के अंदर, जिसमें टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट और वो लोग जो न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और वहाँ पे उनको वेंचर कैपिटल की तलाश रहती है। तो जो ओपन जो है, इसके माशाल्लाह मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ स्टेट के अंदर, और बहुत ही अच्छे और बड़े मुस्बत पॉजिटिव काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पहली बार जाना हुआ था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई उन लोगों से मिलके, इनकी इंतज़ामिया से मिलके, और वहाँ जो टेक्नोक्रेट्स आए हुए थे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के, उनसे भी मैंने मुलाकातें की हैं जो कि आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं समझता हूँ ओपन एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बेहतरीन किरदार अदा करने की अहलियत रखता है, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो ओपन से ब्रिज को कायम रखे और जो इस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करे। बल्कि एक ओपन का जो इवेंट है वो एक पाकिस्तान में भी होना चाहिए। I think this is a great event for the Pakistani American community, because what Open is doing is that it is bringing entrepreneurs and the community together, to actually create new ideas, new businesses for the betterment of the community. I think that's the whole idea, right? So if you saw here today, we have invited a lot of venture capitalists. These are people who invest in companies. You see a lot of very good entrepreneurs here, and the idea is to come together, share ideas, so that success comes out of it. And Open is an enabling platform. How are you doing it? I don't know exactly. This is my first time. Right. So actually, Open has been around since late 90s, and actually I became more active in Open in 2000. So since 2000, I've been actively participating in helping people, achieve their goals and dreams by sharing ideas with them as part of Open. I see. Is this Open have a branch in Pakistan? Actually, we don't have a branch in Pakistan yet, but we actually have branches in the United States, and we recently opened a branch in Dubai. Our goal is to open a branch in Pakistan very soon.
I see. Okay. So it's a kind of a bridge, economic bridge between Pakistan and America. Absolutely, this is an With the economic entrepreneurs, bridge. the Pakistani entrepreneurs. Absolutely. So yeah, I know. What do you do by the way? I am the founder, chairman, and chief technical officer of a company here in Silicon Valley. It's called Zenprise. And Zenprise, actually, what we do is that we make software for managing enterprise data centers. The data center. Yes. So that's what. Yeah, I mean, automobile data center. But Yes, we automate the operations since how long you do this? since 2003 I see. for the last 4 years. So what education background? Yes, so I actually got my PhD in computer science from USC. Oh, I was in Los Angeles. Yeah. US, you own the city. So my background is in computer science. I got a bachelor's degree, master's degree, and PhD in computer science. And then I came to Silicon Valley. I graduated in '95. In 95. And since '95, I've been here, and I've been here. First I worked, and then I've started my own businesses, and I've had my share of success, and now we want to share that with women. So what did you achieve today? I think achievement-wise, I think personally for me, it was very satisfactory to listen to other people that have gone through the same experience, have had the same opportunities, the same challenges, and also to be able to let other people know that these possibilities are available to them. Excellent. Thank you very much. Yeah, of course, my pleasure. Jamal, you're attending this convention open today. What is your opinion? What did you got today? I think it was a good collection of really Pakistanis really doing some great things and important things in this country and worldwide. So I think it's really, it shows how much progression has been made in the Pakistani community in terms of business and economics and actually helping the world make it a better place. Tell us about a little bit a story about Open, because you are a father of a man, is a very talented boy, very talented entrepreneurs, good man, he has a good heart, and he has a pain for Pakistan as well. I think he is, what happened that ever since he came to study here, he has been blossoming all the time, and I always let him, and he's done well, but he always has one thing and a passion for serving Pakistan. So what he did, he founded a company here, and then he founded another company also back in Karachi, which is Folio 3, doing quite well. He started modestly, with about 25 people. Now he's got about 65, 70 people working for him, and it's almost like offshore, like they do in Bangalore. They do the offshore job, so he's doing it for this year. And now after that he sidestepped also to other things like venture capitalists. So he's also in venture capital. Plus he has taken the honors of Open. So, and I just don't know how he's trying to find time to do all these at the same time. I know. One thing I know, I keep on telling him that go slow, don't burn yourself out. Doesn't listen to me. The other thing is, he never misses an opportunity. That's for sure. What are your views about today's event? Alhamdulillah, it's going very well. I flew last night, or aaj raat ko I'm going to take the overnight flight back. Magar it's been well worth it to meet all of these wonderful people, and some very big names from Silicon Valley venture capital community are here to talk to the Pakistani community. And it makes us very proud that the Pakistani community has gotten to this stage. People really pay attention to us as a community, especially in this high technology area. So, what you are doing here, what's your interest? Definitely some interest bring you here. So ہم لوگ جو ہیں we develop technologies that help improve health care. اور ہم دو ایریاز میں کام کرتے ہیں. ایک پبلک ہیلتھ کے ایریا میں جہاں پہ ہم ڈیزیز سرویلنس کرتے ہیں, جیسے اگر برڈ فلو کی آؤٹ بریک ہو جائے یا کوئی اسمال پاک, کوئی بھی کمیونیکیبل ڈیزیز کی آؤٹ بریک ہو جائے جس کی انفارمیشن گورنمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ رسپونڈ کر سکیں اس قسم کے ایونٹ کے لیے, ہم وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں جس سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ ہاسپٹلز, لیبس, ڈاکٹروں کے آفیسز سے کنیکٹ کر کے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں گورنمنٹ کو. دوسری سائڈ پہ ہم مدد کرتے ہیں ڈاکٹروں کی ان پرووائڈنگ بیٹر کیئر, امپروونگ دا کیئر. سو ہمارا سسٹم جو ہے ایک واچز کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, پیشنٹ کی کیا پروفائل ہے, اینڈ دین آئیڈینٹیفائز گیپس کہ وہ اس کے اس بندے کا جو ہے کینسر کا ڈائگنوسس ہوا تھا 6 مہینے پہلے, اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا ہے, کوئی بایوپسی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایکس رے نہیں ہوا ہے, somebody needs to be notified کہ اس پیشنٹ کو واپس بلایا جائے اور اس کو یہ کیئر پرووائڈ کی جائے. اچھا.